mantra meditation, picnic, and much more. The teachers are Shamli Radhika Mataji and Madhuri Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. And a dear disciple of Srila Prabhupada. Prabhuji was engaged in book distribution, not engaged, but he is since last 49 years, he is continuing book distribution and coming to Bombay, other places also for book distribution. Currently, he is a temple president of Nitai Gaur Nataraj Temple in California and very much known for his ecstatic dance, Kirtan, as we are all observing in Mangala Aarti and other Kirtans. So we are very grateful to him that he always ready to accept our invitation and coming in different festivals, especially Srila Prabhupada Memorial Festival. So we welcome Prabhuji by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Grace Udayananda Prabhu ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. So we request Prabhuji to please enlighten us with the nectarian glories of Srila Prabhupada. Hare Krishna. Om Jnanatamranda Shagyananjana Salakaya Chakshur Minitam Yena Tasmai Shri Gurude Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitanamani. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvisesa Sunyavadi Pasacha Disatarna. So, I'm so happy to be in Ujjain. तो मैं उज्जैन में आके बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ Because Ujjain is my home. क्योंकि उज्जैन मेरा घर है. हरि बोल. And in my home lives my family. और मेरे घर में आप सब मेरे परिवार के लोग हैं. हरि बोल. So we all know what happened 2 years ago. हम सभी जानते हैं कि 2 वर्षों पहले क्या हुआ था.
on the 4th of July 2020 4 जुलाई 2020 को at 8 a.m. in Orlando, Florida, सवेरे 8 बजे ऑरलैंडो फ्लोरिडा में the second most horrible days of my life. मेरे जीवन का दूसरे सबसे खतरनाक दिन। First most horrible day of my life was November 14th, 1977. मेरे जीवन का पहला सबसे विभत्स दिन था 14 नवंबर 1977। Who knows what day that was? कौन जानता है इस दिन क्या हुआ था? Raise your hand. हाथ उठाइए। Okay, what is it? What is it? Say it loud. I can't hear. डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्रील प्रभुपाद। Yes. Thank you for saying disappearance, because the pure devotees they're not born. They appear and they disappear. तिरुभाव कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त इनका आविर्भाव और तिरुभाव होता है, ये प्रकट और अप्रकट होते हैं। So who here has met Bhakti Chu Swami Maharaj? Raise your hand. तो यहाँ पे कौन कौन भक्ति चारू स्वामी महाराज से मिले हैं? हाथ उठाइए। Everyone. हर कोई मिला है। Okay. Who has not? Raise your hand. कौन उनसे नहीं मिला है? हाथ उठाइए। Okay. ठीक है। All right. So we're both sad, right? Those who have met him were sad, and those that haven't met him are sad. जो उनसे मिले हैं वे भी दुखी हैं, जो उनसे नहीं मिले वे भी दुखी हैं। Because to meet such a transcendental sublime character is so rare. क्योंकि ऐसे दिव्य आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात बहुत ही दुर्लभ है। You know, there is a saying, I'm not sure where this came from, एक कहावत है, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आती है, but it was told to me when I first joined the temple. कि तो मैंने पहली बार तब सुनी थी जब मैं मंदिर में मैंने योगदान किया था। The rarity of meeting a pure devotee of Krishna भगवान के शुद्ध भक्त से मिलने की दुर्लभता is equal to a turtle, one turtle, one turtle टर्टल, ओके, at एक the, कछुआ in the bottom of the Pacific Ocean. प्रशांत महासागर के तलहटी में एक कछुआ मिलने की जो संभावना है, वही संभावना भगवान के शुद्ध भक्त के मिलने की होती है। Has any of you seen the Pacific Ocean? क्या किसी ने प्रशांत Raise your महासागर को hand if देखा you saw है? the हाथ Pacific उठाइए। Ocean. प्रशांत महासागर किसने देखा है? No one else? एक व्यक्ति ने देखा It है। is, One it's person. enormous. It's the biggest ocean. It's unbelievably huge, ये वास्तव में like बहुत ही endless. विराट है। right? So in that vast ocean, imagine there's one turtle, तो इतने बड़े महासागर में कल्पना कीजिए एक कछुआ है, right? It's almost like one cell in your body. So they said the rarity of meeting a pure devotee is like one turtle in the bottom of the Pacific Ocean, and it swims to the surface of the ocean. तो एक कछुआ जो कि समुद्र की तलहटी में रहता हो, वो तैरता हुआ समुद्र की सतह पे आ जाए और फिर आपसे मुलाकात हो, ये कितना दुर्लभ है। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त को मिलना बहुत ही दुर्लभ घटना है। That's impressive. Hare Krishna. And in the top of the ocean, floating on the surface, in the entire Pacific Ocean, is one board. And in that one board, there's one knothole. Right? और प्रशांत महासागर के इस पूरे सतह पे एक लकड़ी का फट्टा तैर रहा है, उसके अंदर एक छेद है। And then that one turtle swims up to the surface and puts his head through the knothole. और वो कछुआ तैरता हुआ बाहर आता है, लकड़ी के उस फट्टे के छेद से अपनी गर्दन को बाहर निकालता है। What are the chances of that? इस घटना के होने की संभावना कितनी ज्यादा है? That is the rarity of meeting the pure devotee of Krishna.
तो कृष्ण के शुद्ध भक्त से मिलने की संभावना इतनी दुर्लभ होती है। So all of you, or most of you, but even if you haven't met Guru Maharaj, Bhakti, Charu Swami, still you may have seen his lectures, right? Or read some books, right? यद्यपि आप भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से नहीं भी मिले हों, तब भी आपने उनके प्रवचन सुने होंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी। And that's almost as good as meeting him himself. और ये उनसे मिलने के समान है। I'm not going to lie to you and say it's just as good. मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और कहूँगा ये एक ही है। Because when I was with Maharaj, I just felt I was in Vaikuntha. क्योंकि मैं जब महाराज के साथ था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मैं वैकुंठ में हूँ। And Prabhupada was like Guru Maharaj times 10. और प्रभुपाद थे गुरु महाराज के 10 गुना। If you can imagine. यदि आप इसकी कल्पना कर सकें तो। So rare. इतना दुर्लभ। So the thing is that all of us have the opportunity to become as successful and purified as Guru Maharaj. बात यह है कि हम सभी के पास गुरु महाराज के ही समान सफल और शुद्ध होने का अवसर मौजूद है। It's actually your spiritual birthright. Birthright. Birthright, okay. तो ये वास्तव में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। It's intrinsic of every spirit soul that we are Satchitananda Vigraha. हर अणु आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद विग्रह होती है। Mamaivam so jivaloke jivabodha sanatana manasastra nindriyani prakritim stani karshite. That is, Krishna says, all living entities, you know, including the bugs and the microscopic bacteria, all living entities, worms, cats, dogs, chickens, human beings, demigods, all living entities are my eternal parts and parcels. कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सभी जीवात्मा चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, मच्छर मक्खी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, ये सभी मेरे अंश हैं। But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. किंतु जीवन की बद्धावस्था में ये कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा मन भी सम्मिलित है। One time Srila Prabhupada was asked, Prabhupada asked his disciples एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया on a walk. I remember it was Yashodanandana Maharaj, who's my godbrother. मेरे गुरु भ्राता यशोदानंदन महाराज इस सैर पर थे। He's walking, Prabhupada says, what does Krishna want? श्रील प्रभुपाद ने प्रश्न किया, कृष्ण क्या चाहते हैं? And he answered very clever. Most of the devotees didn't know how to answer that question, but he answered, Krishna wants that we bring all living entities back home, back to Godhead. और महाराज को पता नहीं था क्या उत्तर देना चाहिए, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, कृष्ण चाहते हैं कि सभी जीवात्माओं को भगवत धाम वापस ले जाया जाए। And Prabhupada said, thank you very much. प्रभुपाद ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। So that's the goal of, that's what Krishna wants. The pure devotee doesn't do anything for themselves. They do only for what Krishna wants. तो यही वास्तव में कृष्ण चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण की इच्छा को छोड़ के और कुछ भी नहीं करना चाहते। So Prabhupada came to the United States. He got on a tremendous seasickness. और उन्हें समुद्र में होने वाली बीमारी भी हुई।
he said, he wrote down in his writings, if another one of these, he didn't know what they were, later on was discovered he had a heart attack. He said, I think I will perish, I will die. श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं, यदि और ऐसा तीसरा हृदयाघात आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा. And he was sailing over to a land he'd never been to. श्रील प्रभुपाद ऐसे स्थान पर जा रहे थे जहाँ पे वे पहले कभी भी नहीं गए थे. Not only did he had never been to, he didn't know anyone there. न सिर्फ वे वहाँ कभी नहीं गए थे, बल्कि वे वहाँ से किसी से भी परिचित नहीं थे. In other words, he was coming to save people he didn't even know. दूसरे शब्दों में कहें तो वे ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए वहाँ जा रहे थे जिन्हें वे जानते भी नहीं थे. And I was one of those people. और उन लोगों में से मैं एक था. And every one of you और आप सब में से भी are one of those people. हम सभी उन लोगों में से एक हैं. So you may not have directly met Srila Prabhupada, हो सकता है आपकी मुलाकात श्रील प्रभुपाद से नहीं हुई हो, but you met Prabhupada's best disciple, किंतु आप श्रील प्रभुपाद के सर्वश्रेष्ठ शिष्य से मिले हैं. His Divine Grace Bhakti Charu Swami Maharaj. श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज. So I was 19 years old, and I'd been studying books on yoga in college. तो मैं उस समय 19 वर्षों का था और मैं कॉलेज में योग के ऊपर पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था. And I came upon a devotee in a parking lot at a supermarket. तो मैं सुपरमार्केट के पार्किंग में एक भक्त के संपर्क में आया. And he was passing out Srila Prabhupada's books. और वे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर रहे थे. And I had been reading a book called Autobiography of a Yogi. और उस समय मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पुस्तक का पाठ कर रहा था. And inside that book, it had different pictures of sadhus and so on. And then it had these shaved head peoples, and it said devotees of Krishna. उस पुस्तक में कई प्रकार के साधुओं का फोटोग्राफ था और उसमें से एक चित्र ऐसे व्यक्ति का था जिनका सिर घुटा हुआ था और वे कृष्ण के भक्त थे. And I had seen the devotees for a few years. I first met the devotees in 1970. मैं पहली बार भक्तों से सन 1970 के दशक में मिला था. And you know, I was in high school at the time, and they looked very strange to me. उस समय मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था और ये सब मुझे बड़े ही अजीब से प्रतीत हो रहे थे. But by that time, I had, after studying some books on yoga, I started to appreciate, well, what are these Hare Krishnas anyway? किंतु योग के ऊपर कुछ पुस्तकों का अध्ययन करके मैं सोचने लगा कि आखिरकार ये हरे कृष्ण हैं कौन. So then I saw in this book, these pictures of shaved head Hare Krishnas. I was like, oh, the Hare Krishnas are disciples of Paramahamsa Yogananda. और जब मैंने उनकी पुस्तकों को पढ़ा तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ओ ये हरे कृष्ण परमहंस योगानंद के शिष्य हैं. And I thought, oh, those rascals. और मैंने सोचा वो बदमाश, They're not following their guru. ये अपने गुरु का, They're shaving off all their hair. ये गुरु का पालन नहीं कर रहे, अनुशीलन But नहीं कर रहे. Paramahamsa had this big old long hair. परमहंस के इतने लंबे लंबे बाल और इन्होंने सिर घुटवा लिया. And I was a hippie then. उन दिनों में मैं एक हिप्पी हुआ करता था. So I had long hair. तो मेरे भी लंबे बाल थे. I was like, you should grow your hair long like your guru. तो मेरा कहना था भाई अपने गुरु की जी की So I तरह said, the लंबे बाल next रखा करो. time I see a Hare Krishna, I'm going to set him straight. तो अगली बार मैं हरे कृष्णा से मिलूंगा तो मैं मरम्मत कर दूंगा. So then I started walking into the store, and actually at the time, I come from a very large family. तो मैं एक बहुत ही बड़े परिवार का सदस्य हूँ. And I have 7 brothers. और मेरे 7 भाई हैं. And I have 6 sisters. और मेरी 6 बहनें हैं.
14 children my mother and father had. मेरे माता पिता के 14 बच्चे थे. So I had older brothers that were like 10 years older, and they owned properties, and they happened to have a house which they let us 3 brothers who were in college live at. तो मेरे बड़े भाई जो मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, उन्होंने हमें रहने के लिए एक मकान दिया था जिसमें मैं और मेरे 3 भाई जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे रहा करते थे. And I lived in the attic, in the very top of the house. और मैं उस घर की छत पे रहा करता था. Because I didn't want to associate with them because they were non-vegetarians. I was a vegetarian at least. मैं उस समय शाकाहारी हो चुका था और मैं उन मांसाहारियों का संग नहीं करना चाहता था. So one of my brothers had a girlfriend. तो मेरे एक भाई की बांधवी हुआ करती थी. So I had a car and she wanted to buy groceries. So she said, "Give me a ride to the supermarket." That's why I went to the supermarket. तो वो सुपरमार्केट जाना चाहती थी चीज़ खरीदने के लिए, तो उसने कहा मुझे अपनी गाड़ी दो, मुझे सुपरमार्केट जाना है. तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ गए. So I had no intention of seeing a Hare Krishna that day. तो उस दिन मेरे हरे कृष्णा को देखने की कोई इच्छा नहीं थी. So we got out of the car. I saw the devotee. She went into the store, and he looked at me and went, "Hare Krishna," and I went, "Om." तो हम लोग सुपरमार्केट गए और माता जी अंदर चीज़ लेने के लिए गई. वो हरे कृष्णा भक्त मेरे पास आते हैं, कहते हैं हरे कृष्णा. मैंने कहा ओम. So then I said, I've been reading your spiritual master, one of your spiritual master's books. तो मैंने कहा मैंने आपके गुरुदेव की एक पुस्तक पढ़ी है. And he said, "Oh, which book was that?" उन्होंने कहा कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने? And I said, "The autobiography of a yogi." मैंने कहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. And he said, "That's not our spiritual master." तो उन्होंने कहा वो हमारे गुरुदेव नहीं है. You have Prabhupada's book here? Any Prabhupada's book? No. We don't have anyone have a प्रभुपाद की कोई Prabhupada? पुस्तक है यहाँ पे किसी के पास? Anyone have a book of Prabhupada? श्रील प्रभुपाद की कोई पुस्तक है? Anyone have Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita? Oh, there one. Hand that भागवतम up गीता there. चैतन्य That's चरितामृत. the book I was looking for. मैं ऐसी पुस्तक को खोज Yeah, रहा था. keep passing it up. Look at that. I love it. Disciplic succession. तो गुरु परंपरा के माध्यम से पुस्तक हमारे पास आ रही है. Hari Bol. Oops. He goes, "That's not our spiritual master. That's our spiritual master." तो उन्होंने कहा ये हमारे गुरु हैं. Srila Prabhupada ki! जय. And immediately my whole debate was gone. And I looked at Prabhupada, had a shaved head. I think, "Oh, okay." And then he said to me, he's a very intelligent man. He said, because Paramahamsa Yogananda was Mayavadi. He was like, "I'm God, you're God, we can all be God." और तब सारा वाद विवाद बंद हो गया. मैंने देखा प्रभुपाद जी के तो सर घुटा हुआ है, इन सब का भी सर घुटा हुआ है. तो तब हमारी बहस बंद हो गई और फिर मुझे मालूम पड़ा कि परमहंस योगानंद एक मायावादी हैं, यानी कि तुम भी भगवान, मैं भगवान, हम सब भगवान. So he said, "Oh, a very unfortunate thing happened to Paramahamsa Yogananda." तो उन्होंने कहा वास्तव में क्या आप जानते हैं परमहंस योगानंद के साथ एक दुर्घटना हुई है. And I said, "Oh, really? What was that?" मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? And he said, "He died before he attained perfect enlightenment." ओह, सिद्धि प्राप्त करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई. And I said, "Oh, that's terrible." मैंने कहा ओह इतना खराब. And then he said, "Oh, don't worry, he'll take birth again." You said. He said, "Oh, don't worry, he'll take birth फिर again." उन्होंने कहा चिंता मत करो, उसको फिर से जन्म मिलेगा. I said, "Oh, that's great, that's good." तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई. I didn't know you're supposed to get out of the cycle of birth and death. मुझे पता नहीं था कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर भी निकल सकते हैं. And then he said, "Brahmeti paramameti bhagavanichi sabjate." तब उन्होंने कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. And as soon as he said that, और जैसे उन्होंने वो कहा I was destroyed. मैं नष्ट हो गया. I was like, that was the first time I heard Sanskrit.
Brahmeti paramameti bhagavaniti satchate. इतनी संस्कृत मैंने जीवन में नहीं सुनी थी. And it was so astounding. I don't know why, but immediately in my mind I thought, oh my Krishna, well not Krishna, but oh my God, this person knows way more than me. और तब मैंने मन में विचार किया, हे भगवान, इस आदमी को तो मुझसे बहुत ज़्यादा मालूम है. And so I became humble. I said, well, tell me more about this. And he just started preaching about Krishna being the perfect supreme God. God is understood, first of all, what Brahman is, what is Paramatma, and then what is the supreme personality of Godhead. और इसके बाद ये भक्त मुझे प्रचार करने लगे, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, इत्यादि. This was all in the parking lot of a supermarket. ये सुपरमार्केट के पार्किंग में सब चर्चा चल रही थी. And so I was like astounded. He said, listen, I want to give you a gift. मैं इतना आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा सुनो, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ. And he said, and he handed me a Sri Upanishad. और उन्होंने मुझे एक श्री उषोपनिषद पुस्तक दी. And he said, will you read, because I was a voracious reader, I read everything. और मैं एक किताबी कीड़ा था, जो हाथ में आता था उसे पढ़ लेता था. So he said, I'm going to give you this book, but you have to make a promise before God that you will read this book. मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा, किंतु एक शर्त पे तुम्हें भगवान के सामने कसम खानी होगी कि तुम इस पुस्तक का पाठ करोगे. I said, that's easy, I'll definitely read this book. मैंने कहा ये बड़ा आसान है, मैं तो बिल्कुल पुस्तक को पढ़ूंगा. And he handed me the book and I said, wait 1 second. And I ran into the store. I really didn't have any money. A lot of people say, I don't have any money, but I didn't have any money. So I ran in the store and went up to my brother's girlfriend and said, give me $2. And she goes, you're not going to give me. I said, just give me $2, okay? और उस समय मेरे पास कोई पैसा नहीं था, तो मैंने कहा देखो मेरे पास पैसा नहीं है. मैं तुरंत दौड़ के अंदर गया, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड के पास गया, मैंने कहा $2 दो. बोलते नहीं, तुम ये पैसा उसको नहीं दे सकते. मैंने कहा अरे $2 लाओ ना फटाफट. So she gave me $2. Actually, she actually made the benefit. She's the one that's, I've never seen that woman again since the time. That was 55 years ago. At any rate. ये 55 साल पहले की घटना है. So I ran out and I gave him the $2 and he said, let me give you this book too. And it was a perfection of yoga. तो मैंने उन्हें $2 दिए और उन्होंने मुझे योग की पूर्णता पुस्तक भी प्रदान की. I said, I can't get any more money out of that woman. She's not going to give me any more money. मैंने कहा देखो मैं और पैसा नहीं दे सकता, ये पुस्तक फ्री में देनी पड़ेगी. And he said, no, I really want you to read those 2 books. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ आप उन 2 पुस्तकों का अध्ययन करें. I said, not only am I going to read these books, I'm going to read it as soon as I get home. मैंने कहा न सिर्फ मैं इन पुस्तकों का पाठ करूंगा, बल्कि मैं घर पहुंचते इनको पढ़ना शुरू कर दूंगा. So I went home and I started reading The Perfection of Yoga. तो मैं घर गया और योग की परिपूर्णता पुस्तक का पाठ करने लगा. And I was like, wow, this little book has millions of times more knowledge than this big, thick autobiography of a yogi book. और जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लगा तो मैंने कहा वाह, इस पुस्तक में जितना ज्ञान है ये तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की आत्मकथा पुस्तक से कई गुना ज्यादा है. He tells the story better than me. Any rate, so then I read the Sri Upanishad. तब मैंने श्री उषोपनिषद का पाठ किया. And I was finished. I said, I'm going to become a Hare Krishna. और तब मैंने तय कर लिया, मैं हरे कृष्ण भक्त बनूंगा. हरि बोल. Book distribution key. जय. Okay, so I told them I'll go the next week to the temple. मैंने उनको बताया मैं अगले हफ्ते मंदिर आने वाला हूँ. But for some reason Maya came up and I was doing something on that. Oh, I was going to go to the Hare Krishna temple.
किसी कारण से माया बीच में आ गई और मैंने कहा ओह मैं तो हरे कृष्ण मंदिर जाने वाला था, क्या हो गया? So then I had one friend that was my best friend since we were 7 years old. We were closer than brothers. तो मेरे एक बहुत ही जिगरी यार थे जो कि 7 साल की उम्र के साथ मेरे साथ उनका मित्र था, उनकी मित्रता थी. And I was thinking, well, if I'm going to become a Hare Krishna, at least Pat's got to become one too, because I won't miss anyone else, but I'll definitely miss him. और मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हरे कृष्णा बन के क्या करूंगा, कम से कम मेरे जिगरी यार को भी हरे कृष्णा बनाता हूँ. So I gave him the Perfection of Yoga तो मैंने उन्हें योग की परिपूर्णता And the- पुस्तक प्रदान की and the Sri Upanishad. और श्री ईशोपनिषद पुस्तक भी दी. And he read them, और उन्होंने उसे पढ़ा. and then he said, I want to go to the temple. उसने कहा मैं भी मंदिर जाना चाहता हूँ. अरे वो I had been going to the temple, मैं मंदिर जा रहा था कुछ दिनों से and I'd been telling him, and then finally he said, yes, I want to go. और बाद में मेरे मित्र ने भी कहा मैं भी मंदिर जाना चाहता हूँ. Anyways, I won't get into all the details, but I became a devotee of some sort, खैर दूसरी बातों को छोड़िए, मैं किसी प्रकार से भक्त बन गया. and my friend Pat, he was initiated Pragosh Das. और मेरा मित्र पैट, इनका दीक्षित नाम हुआ प्रघोष दास. अरे वो Pragosh he's a book distributor. He ended up distributing books, प्रघोष ग्रंथों का वितरण करने लगे and he became the biggest book distributor during the time of Srila Prabhupada. और श्रील प्रभुपाद के समय में ये इस्कॉन के सबसे बड़े ग्रंथ वितरक बन गए. And I was in the top 10. और मैं भी पहले 10 अव्वल भक्तों में से एक था. And over the last 50 years, I have distributed over 250,000 books. और पिछले 50 सालों में मैंने 2.5 लाख से अधिक पुस्तकों का वितरण किया है. अरे वो And Pragosh has distributed over 750,000. और प्रघोष ने 7.5 लाख से भी अधिक ग्रंथों का वितरण किया है. अरे वो So those two books, the Sri Upanishad and the Perfection of Yoga, they were the same book. He didn't get his own book. That was my book. तो ये जो 2 पुस्तकें थी, योग की परिपूर्णता और श्री ईशोपनिषद, ये उनकी व्यक्तिगत प्रति नहीं थी, वो मेरी पुस्तक थी. But those two books made 2 devotees, उन 2 पुस्तकों ने 2 भक्त बनाए and together we distribute 1 million books of Srila Prabhupada. और हम दोनों ने मिलकर आज तक 10 लाख ग्रंथों का वितरण किया है. अरे वो Srila Prabhupada ki! जय. That's how important book distribution is. इसलिए ग्रंथ वितरण इतना महत्वपूर्ण है. So, moved into the temple, and they made me Sankirtan leader. I got initiated in 1973. तो मैं मंदिर में रहने लगा और 1973 में मुझे हरिनाम दीक्षा प्राप्त हुई. And they didn't make me, I became Sankirtan leader in 1974. और 1974 में मुझे संकीर्तन का नेता बनाया गया. And then I was offered second initiation in July or August of 1974. और जुलाई या अगस्त महीने में 1974 साल में मुझे ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की गई. And so for almost 2 years I've been reading Prabhupada's books, I've been distributing Prabhupada's books, but I had never met Srila Prabhupada. तो उन 2 वर्षों में मैं श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, उनका वितरण कर रहा था, किंतु मैं कभी भी श्रील प्रभुपाद से व्यक्तिगत रूप से मिला नहीं था. So how am I any different than any of you? तो एक प्रकार से देखा जाए तो आप में और मुझ में क्या अंतर है? I was ecstatic to distribute Prabhupada's books. I loved Srila Prabhupada, and I hadn't even met him. मैं श्रील प्रभुपाद से बहुत प्रेम करता था, मैं उनके ग्रंथों का वितरण करता था, किंतु मैं उनसे कभी भी नहीं मिला था. So I know how you feel, not exactly, because eventually I did get to meet him.
तो मैं जानता हूँ आपका और मेरा मामला एक नहीं है, क्योंकि अंततः मेरी श्रील प्रभुपाद से मुलाकात हुई थी। So in 1974, Prabhupada came to Chicago, and we performed the first Rath Yatra festival in Chicago. 1974 में श्रील प्रभुपाद शिकागो आए थे और वहाँ पे हमने पहली बार रथ यात्रा का आयोजन किया। And at that time, I got Brahmin initiation. और उसी समय मुझे ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त हुई थी। So the temple president, Sri Govinda, said, Ujjain, I want you to be Prabhupada's bodyguard. Prabhupada's bodyguard. You know, the bodyguard. बॉडीगार्ड। Bodyguard, yeah. तो उस समय जो मंदिर के अध्यक्ष थे श्री गोविंद प्रभु, उन्होंने मुझसे कहा, उदय मैं चाहता हूँ तुम श्रील प्रभुपाद के अंगरक्षक बनो। I was much stronger back when I was young. You probably think, wow, that's a bodyguard? 50 साल पहले मैं आज से बहुत अधिक हट्टा कट्टा हुआ करता था, मुझे देख के कोई भी भयभीत हो जाए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Yeah, you should see my sons. They're all, I'm old. आप मेरे बेटों को देखिए, अब मैं तो बूढ़ा हो गया। But at any rate, खैर जो भी हो, when Prabhupada came to Chicago, something happened in the airport. I'll tell that story another day, but I'll tell you what happened at my initiation. तो श्रील प्रभुपाद शिकागो आए और हवाई अड्डे पे कोई घटना हुई जो मैं बाद में बताऊंगा, किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी दीक्षा के दिन क्या हुआ था। So, I was at Prabhupada, because I was Prabhupada's servant, they had set up a room in the Brahmachari ashram where Prabhupada actually stayed in the Brahmachari ashram in a room that was fixed up nicely. तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद के रहने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम में कक्ष की व्यवस्था की गई थी और मैं भी वहीं पे था। And they had brought the Vyasasan from Detroit and put it into Prabhupada's room. और डिट्रॉइट मंदिर से व्यासासन लाके श्रील प्रभुपाद के कक्ष में रखा गया था। So Prabhupada was sitting on the Vyasasan. श्रील प्रभुपाद व्यासासन पे बैठे हुए थे, एकदम सीधे। And his servant had big cans of frankincense and myrrh. Do you know what that is? It's an incense that billows smoke. They come in wafers. Anyhow, Prabhupada liked it. They have it in Catholic churches a lot. But anyways, it was burning all this smoke. तो गिरजाघरों में एक ऐसा यंत्र पाया जाता है जिसमें से बहुत धुआं निकलता है, तो श्रील प्रभुपाद के व्यासासन की दोनों ओर इस प्रकार का यंत्र रखा हुआ था। But the smoke would only like go about this high. किंतु उसका धुआं अधिक से अधिक 2 फुट की ऊंचाई तक उठता था। So it looked like clouds. तो देखने से प्रतीत होता था मानो मेघ हो। And Prabhupada was sitting on the Vyasasan, and when I came in, offered my obeisance, looked up, it looked like Prabhupada was floating on a cloud. और श्रील प्रभुपाद व्यासासन पे बैठे हुए थे, मैं अंदर आया, मैंने प्रणाम किया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्रील प्रभुपाद बादलों पे बैठे हुए हों। I thought Prabhupada was levitating, you know. ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रील प्रभुपाद हवा में उड़ रहे हैं। But I offered my obeisances, and then I looked up into the face of Srila Prabhupada, मैंने प्रणाम किया और श्रील प्रभुपाद की ओर ताका, just as I'm looking at Prabhupada, and Prabhupada looked into my eyes, और श्रील प्रभुपाद ने इस तरह से मेरी ओर देखा, and it was as if he looked into my heart. और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने मेरे हृदय में झांक के देख लिया। I can't explain. I've never had that experience since, or certainly not before. But Prabhupada was looking into me, and it was as if he knew everything about me. मुझे इससे पहले ऐसा अनुभव कभी भी नहीं हुआ था। श्रील प्रभुपाद ने मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे हृदय में झांक कर देख लिया। And the look was so intense, but it wasn't a look like, oh, you filthy, dirty, karmi, or you sinful wretch. It wasn't that at all. और ये दृष्टि इतनी पैनी थी, किंतु ये इस प्रकार नहीं थी मानो श्रील प्रभुपाद कह रहे ओ तुम पापी कहीं के, नालायक कहीं के। It was a look of infinite compassion. इस दृष्टिकोण में अनगिनत कृपा का प्रदर्शन हो रहा था, असीम कृपा का प्रदर्शन हो रहा था।
And I felt very ashamed. I felt very like contaminated before him. और मुझे बहुत अधिक लज्जा का बोध हुआ. But I was on my knees, and Prabhupada said, "Come close." मैं अपने घुटनों पे था, प्रभुपाद ने कहा पास आओ. So I kind of scooted up. तो मैं धीरे धीरे प्रभुपाद के पास गया. And of course, my mind is reeling because how many, at the beginning of my lecture, remember I mentioned about the turtle swimming from the bottom of the ocean, putting its head through the one board floating in the Pacific Ocean? This is what was happening to me at that moment. और मेरा सिर चकराना था. आपको याद है प्रवचन की शुरुआत में मैंने बताया कैसे एक कछुआ प्रशांत महासागर की तलहटी में तैर रहा हो, तैरता हुआ ऊपर आए, लकड़ी के फट्टे में से सिर निकाले. तो ये मेरी परिस्थिति थी. And I was profoundly aware that this was it. I am with the pure Uttama Adhikari Mahabhagavat. और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि हाँ यही जीवन की सिद्धि है. मैं पूर्ण शुद्ध महाभागवत महाधिकारी के साथ में यहाँ पर हूँ. And I could almost not breathe. I was like suffocating. और मैं श्वास भी नहीं ले पा रहा था. Prabhupada said, "Come close. प्रभुपाद ने कहा पास में आओ. Give me your right hand." अपना सीधा हाथ दो. And I was like, which is my right hand? और मैं सोच रहा था कौन सा दायां कौन सा बायां. And fortunately, I gave him the right one. और ठीक है मैंने उनको अपना बायां हाथ दिया. And Prabhupada reached out and touched my hand with his hand. और प्रभुपाद ने अपने हाथों से मेरे हाथों को छुआ. And I had never, Maharaj, did you, before you got Brahmin initiation, did you ever watch like Brahmins like chant on their Gayatri mantra? You know what? I never did that. For some reason, I knew they chanted a mantra. I never noticed the string. I had not a clue. So then Prabhupada took my hand. तो किसी कारणवश मैंने इसके पहले कभी भी ब्राह्मणों को गायत्री जप करते हुए नहीं देखा था. और जब प्रभुपाद ने मेरे हाथ को पकड़ा, And he said, "Take your thumb and put it on this digit. श्रील प्रभुपाद ने कहा अपने अंगूठे को यहाँ पे रखो. And then you take it to this digit, इसके बाद इसको यहाँ ले जाओ. and then this digit." उसके बाद यहाँ ले जाओ. And I'm thinking, और मैं सोच रहा हूँ what's a digit? and ये then- अंक क्या होता है. and there is 10 digits. और ये 10 अंकों की गिनती थी. And then he said, and you chant this mantra. और तब उन्होंने कहा तुम इस मंत्र का जाप करोगे. Om Bhur Bhuva Svatad Savitur. That's all I'm going to say. But he went over the whole Gayatri mantra with me. और तब उन्होंने पूरा गायत्री मंत्र मुझे कह सुनाया. I was totally spiritually intoxicated. मैं पूरी तरह से मदोन्मत्त हो चुका था. And I was almost going to say, could we do that over again? और मैं कहना चाह रहा था क्या हम फिर से कर सकते हैं. Of course, I didn't do that. खैर मैंने ऐसा नहीं कहा. But then, at the end, Prabhupada was sitting there, किंतु अंत में श्रील प्रभुपाद वहाँ बैठे थे. and he said, "So, are you chanting 16 rounds?" I said, "Yes, Srila Prabhupada." तो उन्होंने कहा ठीक है तो तुम क्या 16 माला जप करते हो. मैंने कहा जी हाँ श्रील प्रभुपाद. And then he said, "And are you preaching Krishna consciousness?" और उन्होंने पूछा क्या तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हो. And I said, "Yes, Srila Prabhupada. I'm the Sankirtan leader in Detroit." मैंने कहा हाँ श्रील प्रभुपाद मैं डेट्रॉइट में संकीर्तन का नेता था. And then Prabhupada went just like this. Put his finger up in the air, just like this. He said, "Always preach Krishna consciousness." श्रील प्रभुपाद ने दाएं हाथ की उंगली इस तरह ऊपर उठाई और कहा हमेशा कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो. Haribol! Oh, you know that one, huh? So that was one of the only direct instructions that I got from Srila तो Prabhupada. मुझे श्रील प्रभुपाद से मिले हुए सीधे निर्देशों में ये एक था.
I had some other ones, but that was later on. But that was pretty much the most important, I think. तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्देश मुझे श्रील प्रभुपाद से प्राप्त हुआ था. So then he went like this. All right. Just made that. All right. Like, get out of here. उसके बाद श्रील प्रभुपाद सीधे बैठ के कहते ठीक है, कहना चाह रहे हो निकलो यहाँ से. And so, like, I was thinking, this moment that this is happening, how long, how many births, how many, species of life have I transmigrated, and finally I'm in the presence of not only a pure devotee, but the spiritual master of the entire universe. और मैं सोच रहा था कि मैंने इस मुहूर्त तक आने के लिए कितने जीवन व्यतीत कर दिए, और अंत में मैं भगवान के शुद्ध भक्त, न सिर्फ शुद्ध भक्त बल्कि गुरु महाराज की उपस्थिति में मौजूद हूँ. And I should seize the moment. Somehow I should seize this moment and ask something very profound, something very relevant to the process of self-realization. मुझे क्षण को पकड़ लेना होगा और आत्म साक्षात्कार के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करना होगा. So Prabhupada went like this, all right, and I said, yes, Srila Prabhupada. I bowed down. I was like, I don't want to leave. I've got to ask something. And I did have something in my mind. I didn't know how to frame it exactly, but I didn't know if I had the nerve. तो श्रील प्रभुपाद वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है, और मैंने प्रणाम किया और मेरे मन में प्रश्न चल रहा था और मैं उस प्रश्न को कह नहीं पा रहा था, किंतु मैं And then I looked up, और फिर मैंने ऊपर देखा, and Prabhupada was looking at me, and I said, Srila Prabhupada? पूछ लिया. There was a reason. इसका एक So कारण I was, था. okay. So Prabhupada looked at me, he was sitting there. प्रभुपाद He वहाँ looked बैठे at थे, me, उन्होंने मेरी ओर and then he देखा smiled, और फिर मुस्कुराए. and he said, उन्होंने that is कहा, not necessary. ये महत्वपूर्ण नहीं है. And I was like, totally crushed. और मैं पूरी तरह से टूट गया. So then I said, yes, Srila Prabhupada. And then I offered my obeisances again, and I went out. And, go ahead. मैंने कहा जी श्रील प्रभुपाद, मैंने प्रणाम किया और बाहर चला आया. And two of my very dear friends were waiting outside. और मेरे दो बहुत प्रिय मित्र जो बाहर And they खड़े said, हुए थे, what'd you say, Uday? What'd you say to Srila Prabhupada? उदय तुमने श्रील प्रभुपाद से क्या कहा? And that was Surdas and Vaisheshika Das. और ये थे सूरदास और वैशेषिका दास. And we used to distribute books together at the airport. और हम लोग हवाई अड्डे पे एक साथ ग्रंथों का वितरण किया करते थे. And I said, Srila Prabhupada, can I touch your lotus feet? And they went, oh my God, you're such a dork. मैंने कहा, मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा क्या मैं आपके चरण कमल छू सकता हूँ? उन्होंने कहा हे भगवान, तुम कैसे व्यक्ति हो, क्या पूछते हो? Anyway, but here was the reason I was asking that. तो यहाँ है वो कारण क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद से ये प्रश्न कर रहा था. When I first joined the movement, there was not Guru Puja. जब मैं आंदोलन में आया उस समय गुरु पूजा नहीं हुआ करती थी. It didn't start till now. हुआ था. लोग की धूल चाहिए. But Prabhupada said, it is not necessary. प्रभुपाद ने कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है. And I was like, oh no. मैं सोचा था नहीं. How am I going to get the dust of his lotus feet? मुझे प्रभुपाद के चरण कमलों की धूल कैसे मिलेगी? So because I was Prabhupada's bodyguard, और चूंकि मैं श्रील प्रभुपाद का अंग रक्षक था, my service was I had to sleep right outside Prabhupada's door. तो मुझे श्रील प्रभुपाद के कक्ष के बाहर रहने की अनुमति रहा करती. So I was outside Prabhupada's door तो मैं प्रभुपाद के दरवाजे के बाहर रहता था for 24 hours for about 4 days. 4 दिनों तक 24 घंटे में श्रील प्रभुपाद के दरवाजे की रखवाली कर रहा था. And every time Prabhupada would come out, I would offer my obeisances. और जब जब श्रील प्रभुपाद बाहर आते थे तब तब मैं उन्हें प्रणाम किया Like करता था. Shruti Kirti was saying today,
that he would offer, he'd give him a puri, offer his obeisances, give him puri, offer his obeisances. शुद्ध कीर्ति प्रभु दोपहर में बता रहे थे कैसे वे उन्हें रोटी देते थे और प्रणाम करते थे, रोटी देते थे और प्रणाम करते थे. So that's what I was doing. He'd come out the door and offer my obeisances. And every time his foot would come like 6 inches from my head. And I'm like, eh. और हर बार जब श्रील प्रभुपाद बाहर आते थे मैं उनको प्रणाम करता था और उनके चरण कमल मेरे सिर से 6 इंच की दूरी पर रहा करते थे. And I thought, oh, it's not necessary. Hare Krishna. Did you say that? Radhapada. I finally conquered Radhapada. He can't even translate that one. So it is not necessary. All right, so anyways, and I'll come back to some of the things that happened during that time, but खैर जो भी है मैं वहाँ पे होने वाली और घटनाओं के बारे में भी बताऊंगा कुछ समय बाद. so, but I'm going to fast forward from 74 to 77. अब 74 से सीधे बढ़ते हैं 77 की घटना की ओर. So I don't know. Did anyone hear my little talk this morning? क्या आज मेरे सवेरे के वक्तव्य में कोई था, कोई मौजूद था? Raise your hand if you were हाथ उठाइए यदि आप मौजूद थे. I know Maharaja skipped out. I was looking for him. मुझे पता है महाराज नहीं थे. Okay, well I can say the story because I told it this morning, so it'll be the first time you heard it. No, I'll tell part of it. But at any rate, somehow or other I was in Vrindavan Dham in October 1977. किसी प्रकार से मैं अक्टूबर 1977 में श्री वृंदावन धाम में चला गया था. So I was there with the temple president from Detroit, Govardhan. तो मैं उस समय डेट्रॉइट मंदिर के अध्यक्ष गोवर्धन प्रभु के साथ वहाँ पर गया था. And we got to Krishna Balaram guest house, and within 2 minutes someone came knocking on the door. और जैसे ही हम कृष्ण बलराम गेस्ट हाउस में जाके रुके कोई आया और दरवाजा खटखटाया. So it was Prabhupada's servant and Upendra, and he said, Prabhupada wants to see you right now. तो ये श्रील प्रभुपाद के सेवक थे उपेंद्र और उन्होंने कहा श्रील प्रभुपाद आपसे अभी मिलना चाहते हैं. And we immediately, we were like put on a clean kirtan, put some tilak on, went running. और हमने तुरंत साफ वस्त्र पहने, कुर्ता पहना, तिलक लगाया और दौड़ के गए. So we went through the library into Prabhupada's garden. We were coming around into Prabhupada's room, and we were stopped by Tamal Krishna Maharaj. तो हम पुस्तकालय से होते हुए श्रील प्रभुपाद के बगीचे से होते हुए आगे बढ़े और तमाल कृष्ण महाराज ने हमें वहीं रोका. And he said, I have to prepare you to see Srila Prabhupada because you are going to see him like you've never seen him before. महाराज ने कहा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. श्रील प्रभुपाद को आपने पहले जैसा देखा था वे अब उस तरह नहीं हैं, तो मैं आपको उसके लिए तैयार करना चाहता हूँ. This is exactly what Prabhupada looked like. ये एकदम श्रील प्रभुपाद की प्रतिकृति है. Not in 77, but this is how we all remember him, and how when he came and saved the world, this is what he looked like. यहाँ पे जैसे श्रील प्रभुपाद का विग्रह है, श्रील प्रभुपाद देखने में ठीक उसी प्रकार दिखते थे जब वे अमेरिका आए और हम सबकी रक्षा की. But Prabhupada hadn't eaten in 6 months. श्रील प्रभुपाद ने पिछले 6 महीनों से कुछ नहीं खाया था. And so he said, say encouraging things to Prabhupada. Don't bring any negativity in. Don't complain about other people's zone or whatever. Don't bring any problems to Prabhupada. We're just trying to say encouraging things so that Prabhupada will feel encouraged. श्रील प्रभुपाद से कोई भी नकारात्मक बात नहीं कीजिएगा, कोई शिकायत नहीं कीजिएगा, सिर्फ श्रील प्रभुपाद से उत्साह भरी बातें कीजिए, उन्हें उत्साह देने का प्रयास कीजिए. And he said, and above all, don't cry. और सबसे ऊपर बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोना मत. So we came in the back of his bed. तो हम उनके बिस्तर के पीछे और पिछली तरफ से आए. Prabhupada was laying there. We went around
to the foot of his bed and offered our obeisances. श्रील प्रभुपाद वहाँ लेटे हुए थे, हम बिस्तर की ओर पीछे की ओर गए और वहाँ पे हमने प्रणाम किया. And then we stood up और तब हम खड़े हुए and we were shocked. और हम स्तंभित रह गए. Prabhupada, all of his muscles, all of his skin was just over the frame of his bones. श्रील प्रभुपाद के शरीर से मेद और मांस समाप्त हो चुका था, केवल हड्डियां दिखाई दे रही थी. I could see his rib cage. He was in an emaciated condition. श्रील प्रभुपाद की तबीयत बहुत अधिक खराब थी. And the temple president immediately covered his face with his chadar and silently he couldn't control himself. He was just weeping and weeping, weeping. और मंदिर के अध्यक्ष अपने आप को रोक नहीं पाए, उन्होंने चादर से अपने मुंह को ढक लिया और अंदर ही अंदर वे विलाप करने लगे. And Prabhupada was going blind at that time. और श्रील प्रभुपाद उस समय अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे. And he looked up and he could see forms, but he couldn't make out the faces from the head of the bed to the foot of the bed. अपने सिर से पैर तक की दूरी में श्रील प्रभुपाद चेहरों को पहचान नहीं पाते थे, यद्यपि वे लोगों के स्वरूप को देख सकते थे. But he smiled and he said, "Oh, who is here?" तो किंतु वे मुस्कुराए, उन्होंने पूछा, ओह कौन है यहाँ पे? And Tamal Krishna Maharaj said, "Srila Prabhupada, it's Udayananda and Govardhan Das from Detroit." श्रील तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, श्रील प्रभुपाद ये हैं उदयानंद दास और गोवर्धन दास डेट्रॉइट मंदिर से. And Prabhupada, he just started saying things like, "Oh, are you comfortable here at Krishna Balaram guest house? Did you get enough to eat?" श्रील प्रभुपाद ने पूछा, ओह क्या आप कृष्ण बल्लम गेस्ट हाउस में ठीक से हैं? क्या आपको अच्छे से प्रसाद मिला? "Are you happy in Krishna consciousness?" क्या आप कृष्ण भावनामृत में सुखी हैं? And he said, "And are all the devotees in the Detroit temple, are they happy? क्या डिट्रॉइट मंदिर के सभी Getting भक्त nice सुखी हैं? prasadam? क्या उन्हें अच्छे से प्रसाद मिल रहा है? And how is Ambarish? And how is Lekha Shavanti? And are you increasing book distribution?" अमरीश प्रभु कैसे हैं? अन्य भक्त कैसे हैं? और क्या आप ग्रंथों का वितरण बढ़ा रहे हैं? So I went through, "Oh yes, Srila Prabhupada, the facilities are fantastic. Srila Prabhupada was so comfortable. Prasadam is wonderful. The devotees are happy. They just were praying for your recovery." And I just kind of went on and on. I told the story. I'm not going to tell the story again. तो इस प्रकार से मैं कहने लगा, हाँ श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा प्रसादम है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, भक्त लोग बड़े खुश हैं, लेकिन भक्त लोग चाहते हैं आप बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं. और इस प्रकार से मैं कई संकीर्तन की कथाएं सुनाने लगा. And I was trying to say something encouraging, and the sannyasis were laughing. और मैं कुछ उत्साहपूर्ण बातें कह रहा था और वहाँ पे जो सन्यासी खड़े थे वे सब हंस रहे थे. And then Prabhupada smiled. और तब प्रभुपाद मुस्कुराए. And then I covered my face और तब मैंने अपने चेहरे को ढक लिया. because I could see who was this person? क्योंकि मैं देख पा रहा था कौन है ये व्यक्ति. Here he is, totally emaciated, the bones popping out, and they say that the spiritual master takes but he's not. So, Raj, that से ग्रसित लोग
जोर जोर से चीख पुकारने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वे इस दर्द को सहन नहीं कर पाते। But Prabhupada was just like, didn't even say anything about himself. किंतु श्रील प्रभुपाद अपने बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे थे। All he was thinking was the comfort and happiness of his disciples. श्रील प्रभुपाद केवल अपने शिष्यों के आराम के बारे में विचार कर रहे थे। So after some time, so many things Prabhupada asked us, and then he said, okay, go see Krishna Balaram. कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद ने सारे वृत्तांत को सुना और फिर उन्होंने कहा ठीक है, जाओ कृष्ण बलराम के दर्शन करो। So we went in, took a shower. First we went in and cried for about an hour, but पहले हम वापस गए और 1 घंटे के लिए विलाप करते रहे। and then we took a shower, and I was going to the temple to chant some rounds in front of Krishna Balaram. उसके बाद हम नहा के बाहर आए और मैं कृष्ण बलराम के विग्रह के सामने बैठ के कुछ जप करने वाला था। And as I was coming past Prabhupada's quarters, his servant came out, Upendra, and said, "Excuse me, Prabhu, could you do me a favor?" और जैसे ही मैं श्रील प्रभुपाद के कक्ष के बाहर जा रहा था, उनके सेवक उपेंद्र प्रभु बाहर आए और उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करें, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? And I said, "Sure, Prabhu, what do you need?" मैंने कहा, हाँ प्रभु, आप क्या चाहते हैं? And he said, "Could you come in and be with Srila Prabhupada?" और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप अंदर आके श्रील प्रभुपाद के साथ रह सकते हैं? In other words, could you, it's like someone asking you, can you come and get on this flower airplane and fly back to Goloka Vrindavan? ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई मुझसे पूछ रहा हो, क्या पुष्पक विमान में बैठ के गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहेंगे? And I was like, am I hearing this right? और मैं सोचा था, क्या मैंने ठीक सुना? And he said, Srila Prabhupada has been asking for all his disciples all over the world to be with him. और उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद चाहते हैं दुनिया भर के उनके सभी शिष्य उनके साथ आएं और उनके पास में रहें। But for some reason, no one is coming. किंतु किसी कारण से कोई भी पास नहीं जा रहा। And I said, oh yeah, I'm coming. मैंने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ। So he said, okay, come on in. Went into Prabhupada's room and sat at his feet, and he was translating the Bhagavatam. तो उन्होंने कहा, अंदर आओ। मैं अंदर गया, उनके चरण कमलों के पास बैठ गया और देखा श्रील प्रभुपाद भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। He couldn't even hold the microphone. श्रील प्रभुपाद उस समय माइक्रोफोन को पकड़ भी नहीं पा रहे थे। But he had one disciple that I met there who was holding the microphone. किंतु इनके एक शिष्य ने माइक्रोफोन पकड़ रखा था, जिनसे मैं पहली बार मिला था। And his name was Bhakti Charu Swami. और उनका नाम था भक्ति चारू स्वामी। Bhakti Charu Swami Maharaja ki, जय। Srila Prabhupada ki. जय। So that's where I first met Bhakti Charu Swami. तो ये पहली बार मेरी भक्ति चारू महाराज से मुलाकात हुई थी। And I was like, Maharaj, I don't remember, seeing a sannyas initiation. When did you get initiated? और मैं सोच रहा था, मैंने तो इनका संन्यास होते नहीं देखा, आपकी दीक्षा कब हुई? I couldn't figure out the timeline because he joined in December 76, and 2 weeks later he got first and second initiation. क्योंकि ये दिसंबर 1976 में आए थे और इनको 3 महीनों के अंतराल में पहली और दूसरी दीक्षा प्राप्त हुई थी। And then 1 month later he took sannyas. और 1 महीने के बाद उन्हें संन्यास मिल गया। And I saw him and I said, first of all, he was very handsome. मैंने उनको देखा, पहली बात तो बहुत ही सुंदर थे। I said, there is no way he's staying sannyas. Not with my god sisters. तो मैंने कहा, ये सन्यासी नहीं रह सकते हैं, हो ही नहीं सकता। 44 years later, 44 साल बाद he went back to Godhead. वे भगवत धाम वापस चले गए। Bhakti Charu Swami Maharaja ki. जय। So I was sitting in Prabhupada's room and I'm chanting japa, and then they would ask me to go get something. I'd get something, come back. तो मैं प्रभुपाद के कमरे में बैठा था, जप कर रहा था और कोई ना कोई सेवक आ रहे थे। And I was there
at 2 o'clock in the afternoon, and I got to stay till 9 o'clock at night. और मैं सुबह 2 बजे वहाँ पे आया था और रात को 9 बजे तक मुझे वहाँ रहने का अवसर प्राप्त हुआ. And then everyone, there were other brahmacharis and sannyasis and GBC and so on. You know, Prabhupada wanted all those disciples, and Upendra was the only one that I knew, and Guru Maharaj was also getting people to come, to be around Srila Prabhupada. तो कई सारे ब्रह्मचारी सन्यासी जीबीसी सदस्य वहाँ पे थे, किंतु उपेंद्र प्रभु को बाहर मैं ही मिला था, और मैं जब अंदर गया तो मैंने गुरु महाराज को वहाँ पे देखा. So at 9 o'clock when everyone was leaving, as I was leaving, Upendra comes up to me and says, Prabhu, thank you so much for coming to see Srila Prabhupada. जब 9 बजे सब लोग बाहर जा रहे थे तो उपेंद्र प्रभु मेरे पास आके कहते हैं कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्रील प्रभुपाद को देखने के लिए यहाँ पर आए. And I'm like, am I in a parallel universe or something? What's going on here? And I said, Prabhu, thank you. And I said, well, could I come tomorrow and see Prabhupada again? Like, I should be just satisfied, right, for like 7 hours. Am I out of time? Huh? Oh, तो उपेंद्र प्रभु ने कहा कि श्रील प्रभुपाद के लिए आप आइए. I didn't know when no one told me what's my time. Oh, I'm way past my time. Oh, I've taken up too much time. Should I finish this? What does adior mean? And yours means he wants more. Okay, you get more, Maharaj. Okay. Oh, I'm sorry, Maharaj. I didn't know you were going to be. All right. So, any rate, I said, well, can I come back tomorrow? And he goes, would you? And I go, yeah, definitely. और उपेंद्र प्रभु मेरे पास आके कहते हैं क्या कल भी आप इस प्रकार से आना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊँगा. And I said, well, what time can I come? और उन्होंने पूछा मैं कब आ सकता हूँ? And he said, well, what time would you like to come? उन्होंने पूछा तो आप कब आना चाहेंगे? And you don't ask a Sankirtan devotee how much should you give, because I'm going to ask for it all. संकीर्तन भक्त से ये मत पूछो कितना चाहिए, क्योंकि हमको तो सभी कुछ चाहिए. And I said, well, how about after Mangal Aarti? फिर मैंने कहा मंगल आरती के बाद आऊँ तो कैसा रहेगा? And he said, all right. उन्होंने कहा ठीक है. I was like, TK. And so I was totally ecstatic. And so I got to go into Prabhupada's room for 2.5 weeks, every day after Mangal Aarti, until 9 o'clock at night. तो आने वाले 2.5 सप्ताह के लिए मुझे रोज श्रील प्रभुपाद के कक्ष में मंगल आरती के बाद से रात को 9 बजे तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ. हरि बोल. But here's where I'm connecting the two stories. अब यहाँ पे मैं दो कथाओं को Remember my initiation where I said, Prabhupada, can I touch your lotus feet? याद है मैंने दीक्षा के समय प्रभुपाद से पूछा था क्या मैं आपके चरणों को छू सकता हूँ? Okay. So I'm sitting there at Prabhupada's feet. तो मैं प्रभुपाद के चरणों के पास बैठा हुआ हूँ. I'm in Sri Vrindavan Dham. श्री वृंदावन धाम में. I'm in Krishna Balaram Mandir. कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में. I'm in the highest place in the Mahatattva. महत्त्व के सबसे ऊंचे स्थान पे हूँ. But then I look over. किंतु तब मैंने उस ओर देखा and I see this sannyasi. और मैंने उस सन्यासी को देखा. Trivikram Swami. त्रिविक्रम स्वामी. And he's massaging Prabhupada's feet. और वे श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की मसाज कर रहे थे. And he's rubbing up the bottom of his feet with his thumbs. And he's getting, and the lotus feet of the spiritual master are the only way we can attain pure devotional service. And I'm seeing and then he rubbed Prabhupada's legs and then back to his feet. And then he did this. He bowed his head down and put Prabhupada's feet on his head. और त्रिविक्रम महाराज इस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, चरणों को दबा रहे थे, घुटने दबा रहे थे, और फिर उन्होंने अपने सर को प्रभुपाद के चरण कमलों के नीचे रख दिया. And I was so envious.
I was thinking, wow, I had it really great being here at Prabhupada's feet, being in Sri Vrindavan Dham, at Krishna Balaram Mandir, in the Sarat season. मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे कृष्ण बल्लभ मंदिर में वृंदावन धाम में श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों के पास में बैठा हुआ हूँ, कितना अद्भुत मौका है। But this person is putting his head on Prabhupada's feet. किंतु ये व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में अपना सिर रख रहा है। So I was brahmachari then. उन दिनों में ब्रह्मचारी हुआ करता था। And और I was, I'm considering all the things, because back then if you weren't GBC, sannyasi, there was a pecking order there. I was pretty low on the pecking order. तो वहाँ पे बहुत वर्गीकरण था, जीबीसी, सन्यासी, मैं तो बड़ा नया भक्त था। So, but I'm a Sankirtan devotee. किंतु मैं तो संकीर्तन भक्त था। So I want to distribute that book. मैं जाके उस पुस्तक का वितरण करूँगा। So I'm looking over, but see, Trivikram Swami, like I known him at that time, I known him for about a year. मैं उस समय वहाँ देख रहा था, त्रिविक्रम महाराज वहाँ थे और मैं उन्हें पिछले 1 वर्ष से जानता था। And I see Jayadvaita Swami has just come. और मैं देख रहा हूँ जयदत्त महाराज यहाँ पे आ चुके हैं। Jayadvaita Maharaj ki. जय। And Jayadvaita Maharaj knows Trivikram Swami very well. और जयदत्त महाराज त्रिविक्रम महाराज को बड़े अच्छे से पहचानते हैं। And both of us love him very much, right, Maharaj? और हम दोनों उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। But he does have a kind of peculiar side to him. He can be very, go ahead. उनका एक अद्भुत पक्ष है। He can be very cantankerous. Oh, I'm sorry. He can be kind of grouchy. You know what grouchy? Yeah, he gets बड़ी angry. आसानी से क्रोधित हो जाता है। दुर्वासा मुनि क्या होता है? Maybe not angry, but he can like give you the sauce. कभी-कभी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। And so I'm sitting there, and actually we are friends. We're very good friends even today. और हम बड़े अच्छे मित्र हैं। आज भी हमारी मित्रता बड़े अच्छे से चल रही है। He told me to keep talking. महाराज ने मुझसे कहा बोलते रहने के लिए। Oh, he's getting upset? Oh, okay. और मेरा समय हो चुका Okay, है। I'm finishing this up. Okay. मैं बस समाप्त करने वाला हूँ। So, anyway, he's there and he's massaging Prabhupada's feet. वे वहाँ हैं और वे श्रील प्रभुपाद के चरणों को पखार रहे हैं। And I'm thinking, और मैं सोच रहा हूँ, how can I approach Maharaj to get मैं me? कैसे महाराज के पास जाऊँ और कहूँ? And then a miracle took place. और तब एक अद्भुत घटना घटी। Maharaj yawned. महाराज ने जम्हाई ली। And then I knew exactly what I was going to say. और तब मुझे समझ में आया मुझे क्या कहना है। So I humbly crawled over to Maharaj. तो मैं बड़ी विनम्रता से रेंगते हुए महाराज के पास गया। And then I said, Maharaj, मैंने कहा महाराज, you look like you're very tired. ऐसा प्रतीत होता है आप बहुत थक I गए know हैं। you've been here for many, many hours. आप कई घंटों से सेवा कर रहे हैं। And I know it's kind of hard to massage that अब मैं long. जानता हूँ ये मसाज का काम बड़ा कठिन होता Do है। you think maybe क्या आपको लगता है शायद that I could मैं भी क्या शायद कर सकता हूँ? possibly massage Prabhupada's feet? क्या मैं श्रील प्रभुपाद के चरणों को पखार सकता हूँ? And then he turned and looked at me. और वे मेरी ओर मुड़े, उन्होंने मुझे देखा And I thought, oh, here it comes. और मुझे लगा अब आने वाला है। And he said, और उन्होंने कहा okay. ठीक है। And I was like, what? मैंने कहा क्या? So then he showed me how to massage. और तब उन्होंने मुझे दिखाया श्रील प्रभुपाद के Rab. चरणों की मसाज कैसे करनी है। And I got to massage Prabhupada's feet for 2.5 hours. और अगले 2.5 घंटों तक मुझे प्रभुपाद के चरणों को पखारने का अवसर It's मिला। the last pastime. So, and then I got to massage his feet every day for 2 hours for 2.5 weeks. और आने वाले 2.5 सप्ताह तक रोज 2 घंटे मुझे श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। Srila Prabhupada ki! जय। And here's the last of this segment. At one time, about 3 days in,
Prabhupada was, he was getting massaged by Tamal Krishna Maharaj. और एक बार 3 दिनों के लिए तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के चरणों की सेवा कर रहे थे And Prabhupada, you know, he could not see और प्रभुपाद to देख the नहीं end of पाते the थे bed. And he goes, who is this massaging my feet? और प्रभुपाद ने बोला कौन मेरे चरणों की सेवा कर रहा है? And he said, oh, it's Udayananda Das from Detroit. महाराज ने कहा ये उदयानंद दास हैं डिट्रॉइट से। And Prabhupada gave a big smile. और प्रभुपाद के He चेहरे पे said, एक बड़ी हंसी आई। "Oh." उन्होंने कहा He went, ओह oh. And all the hairs on my body stood on end at और one मेरे time. शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। And he was like, I knew you wanted the lotus feet. मानो श्रील प्रभुपाद कह रहे हो मैं जानता हूँ तुम चरणों की सेवा करना चाहते थे। I was only looking to touch. मैं केवल चरण छूना चाह रहा था। But now I got to massage. अब मुझे मसाज Every करने का day. मौका मिला, रोज मिला And I'd put my head. और मैंने अपना सर उनके His चरणों के feet. नीचे रखा। So that's how Prabhupada reciprocated. तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने प्रेम का विनिमय किया। You take one step to him, आप उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं he takes thousands of steps. और to वे you. आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। Srila Prabhupada ki. जय। इस ग्रेस उदयानंद प्रभु की जय। Hare Krishna. Thank you very much, His Grace Udhayananda Prabhu. And let us express our thanks by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now we request His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj to please come. तो हम श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज से प्रार्थना करेंगे कृपया यहाँ पे आएं। So, and after that, we have at 7:10 p.m. we will have Prabhupada Katha by His Grace Shrut Kirti Prabhu. इसके ठीक बाद श्रुत कीर्ति प्रभु हमारे पास आएंगे और प्रभुपाद कथा कह के सुनाएंगे। And after that, His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj. इसके बाद आएंगे श्री श्रीमद जयद्वैत स्वामी महाराज। So we know that all these devotees love Srila Prabhupada so much that they go on speaking for hours together. तो हम जानते हैं वे सभी भक्त श्रील प्रभुपाद से इतना प्रेम करते हैं कि वे कई घंटों बोल सकते हैं। At the same time, we humbly request that we can have we have kept limited slots for each speaker so that we can get maximum benefit. इसी समय हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा समय सीमित है तो आप समय की मर्यादा का ध्यान रखें। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माला माला महाराज को पहनाने के लिए माला। Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Om Jnanatirmandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi
Paschachadeshatarne Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I'm so happy to be here today. मैं सभी भक्तों के बीच में यहाँ आके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ And by hearing the exquisite, divine, transcendental narration by His Grace Udayananda Prabhu, और उदयानंद प्रभु के इस दिव्य आध्यात्मिक वर्णन को सुन के I feel my life has become perfect. मुझे लगता है मेरे जीवन की परिपूर्णता मुझे प्राप्त हो चुकी है। Haribo. हरिबो। I would like to share one beautiful bhajan composed by our own very dear Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा रचित एक भजन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। This bhajan is entitled Markine Bhagavat Dharma, इस भजन का शीर्षक है मार्किने भागवत धर्म, and it was sung and composed by Srila Prabhupada aboard the ship Jaladuta. और इसकी रचना श्रील प्रभुपाद ने जलदूत नाम के मालवाही जहाज पर की थी। On September 17, 1965, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada arrived in Boston. 17 सितंबर 1965 को श्रील प्रभुपाद बोस्टन बंदरगाह पे जा पहुंचे। On board the ship Jaladuta. ये जलदूत नाम के मालवाही जहाज पे थे। Carrying within his heart the orders of his spiritual master. अपने हृदय में अपने गुरुदेव के आदेशों को धारण किए हुए थे। To spread the teachings of Sri Chaitanya. सारी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए। Beyond the borders of India. भारत की सीमाओं के बाहर। And throughout the entire world. और पूरी दुनिया में। As he looked out, जैसे उन्होंने बाहर की ओर देखा, upon Boston's bleak and dirty skyline, बोस्टन की बड़ी-बड़ी इमारतों को देखा, he could understand वे समझ सके the difficulty of this sacred mission, अपने मिशन की कठिनाई को वे समझ पाए, and he felt great compassion और उनके हृदय में महान कृपा का उदय हुआ for these godless people, ईश्वर विहीन सभ्यता के लिए, ये नास्तिक लोग. ये नास्तिक लोग. Thus, with perfect humility, तब पूर्ण विनम्रता के साथ he composed this historic prayer उन्होंने ये ऐतिहासिक कविता की रचना की in Bengali, बांग्ला भाषा में, praying for the deliverance of all the fallen conditioned souls. सारे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वे प्रार्थना करने लगे। Srila Prabhupada ki jai. Boro kripa koile Krishna adamera prati. बड़ो कृपा कोइले कृष्णा
लागिया नीले है था करो एबे गति আছে কিছু কার্য থাবা এই অনুমানে আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে নাহি কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে নহে কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে রাজস্থামো গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন রজস্তম গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন বাসুদেব কথা রুচি নাহি সে প্রসন্ন वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्न तबे जारी तब कृपा होया होय तुकी तबे यदि तव कृपा होय है तू की सकली संभव होय तुमी से को तुकी सकली संभव है तुमी से कतो की কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সে রাসা কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রাসা এটা কৃপা করো প্রভু করিনি যাবাসা এত কৃপা করো প্রভু করিনি জবাসা তোমার ইচ্ছায় সবা হয় মায়া ভাষা তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া ভাষা তোমার ইচ্ছায় নাশা মায়া পারসা তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশা তব ইচ্ছা হয় জারি তাদের উদ্ধারা তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধারা বুঝিবে নিশ্চয় তবা কথা সে তোমার বুঝিবে নিশ্চয় তবে কথা সে তোমার ভগবতের কথা সে তব অবতারা ভাগবতে
Kane Baba Hira hoya sune jadi kane bar bara Rajastamo hoite tabe Ave nista Rajastamo hote tabe paibe nistara Hridoya Bhajasa Gucci Betaha Hridayera bhadra sabe Guchibe tahara Ki koire bujaba kata Barase chahi Ki kore budhabo katha barase chahi Kudra ami dinahina Kono shakti nahi Shudrayami dinahina kono shakti nahi Atacha enicho Prabhu Katha boli bare Athacha enecho Prabhu katha boli bare Je tomari cha Prabhu Koro e bare Je tomara ichha Prabhu karo eri bare Akila Jagat Guru Bachana se amara Akhila jagat guru bachan se amara Alakrinta Koriba Kamata Tomara alankrita koriba khamata tomara Tava Kripa Hoile Mor Kata Shudahabe tava kripa hole mora katha shuddha habe Shuniya Sabara Shoka Dukkha Je Gutibe suniya sabara shoka dukha je ghuchibe Anichao Jari Prabhu Amare Nache aniyacho jadi prabhu amare nachate Nachao Nachao Prabhu Nachao Se Mate nachao nachao prabhu nachao se mate Kastera Putali Jata Nachao Se Mate काष्ठेरा पुतली जाना नचाओ से माते Bhakti Nahai Veda Nahai
Bhakti Vedanta Nam Eve Satakoro. 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 Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. My dear Lord Krishna, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, you are so kind आप इस बेकार आत्मा पर बहुत दयालु हैं upon this useless soul. But I do not know why you have brought me here. लेकिन मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं. Now you can do whatever you like with me. अब आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं. But I guess you have some business here. लेकिन मुझे लगता है कि आपका यहाँ कुछ व्यवसाय है. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? नहीं तो आप मुझे इस भयानक जगह पर क्यों लाते? Most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. यहाँ के अधिकांश जनसंख्या अज्ञान और वासना के भौतिक गुणों से आच्छादित है. Absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudev. भौतिक जीवन में लीन वे खुद को बहुत खुश और संतुष्ट समझते हैं और इसलिए उन्हें वासुदेव के दिव्य संदेश का कोई स्वाद नहीं है. I do not know how they will be able to understand it. मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे समझ पाएंगे. But I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. लेकिन मुझे पता है कि आपके अहेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है क्योंकि आप सबसे विशेषज्ञ रहस्यवादी हैं. How will they understand the mellows of devotional service? वे भक्ति सेवा की मधुरता को कैसे समझेंगे? O Lord, hey Bhagavan, I am simply praying for your mercy so that I will be able to convince them about your message. हे प्रभु, हे भगवान, मैं केवल आपकी दया के लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि मैं उन्हें आपके संदेश के बारे में समझा सकूं. All living entities have come under the control of the illusory energy by your will. And therefore, if you like, by your will, they can also be released from the clutches of illusion. सभी जीव आपकी इच्छा से मायावी ऊर्जा के नियंत्रण में आ गए हैं और इसलिए यदि आप चाहें तो आपकी इच्छा से उन्हें भ्रम के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है. I wish that you may deliver them. Therefore, if you so desire their deliverance, then only will they be able to understand your message. मेरी इच्छा है कि आप उनका उद्धार करें. इसलिए यदि आप उनके उद्धार की इच्छा रखते हैं तभी वे आपके संदेश को समझ पाएंगे. The words of Srimad Bhagavatam are your incarnation, and if a sober person repeatedly receives it with submissive oral reception, then he will be able to understand your message. श्रीमद् भागवतम के वचन आपके अवतार हैं और यदि कोई शांत व्यक्ति बार बार विनम्र श्रव्य स्वागत के साथ इसे प्राप्त करता है तो वह आपके संदेश को समझने में सक्षम होगा. He will become liberated from the influences of the modes of ignorance and passion, and thus all inauspicious things accumulated in the core of the heart will disappear. वह अज्ञान और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार हृदय के मूल में संचित सभी अशुद्ध चीजें गायब हो जाएंगी.
how will I make them understand this message of Krishna consciousness? मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत के संदेश को कैसे समझाऊं? I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अयोग्य और सबसे पतित हूं। Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them, for I am powerless to do on my own. इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं ताकि मैं उन्हें मना सकूं, क्योंकि मैं अपने दम पर ऐसा करने के लिए शक्तिहीन हूं। Somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. किसी न किसी तरह हे भगवान, आप मुझे अपने बारे में बोलने के लिए यहाँ लाए हैं। Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure, as you like. अब मेरे भगवान, ये आप पे निर्भर है कि आप मुझे अपनी पसंद के अनुसार सफल या असफल बना सकते हैं। O spiritual master of all the worlds, हे समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु, I can simply repeat your message. मैं केवल आपके संदेश को दोहरा सकता हूँ। So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. इसलिए यदि आप चाहें तो आप मेरी बोलने की शक्ति को उनकी समझ के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। Only by your causeless mercy will my words become pure. केवल आपकी अकारण दया से ही मेरे वचन शुद्ध होंगे। I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life. मुझे यकीन है कि जब यह दिव्य संदेश उनके दिलों में प्रवेश करेगा तो वे निश्चित रूप से उत्साहित महसूस करेंगे और इस तरह जीवन की सभी दुखी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. हे प्रभु, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली के समान हूँ। So if you have brought me here to dance, then make me dance, oh Lord, make me dance as you like. So यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे नचाइए हे प्रभु, मुझे अपनी इच्छा अनुसार नचाइए। I have no devotion, मुझ में न भक्ति है, nor do I have any knowledge, न ज्ञान है, but I have strong faith in the holy name of Krishna. परंतु कृष्ण के पवित्र नाम में मेरी दृढ़ आस्था है। I have been designated as Bhakti Vedanta. मुझे भक्ति वेदांत के रूप में नामित किया गया है। And now if you like, you can fulfill the real purport of Bhakti Vedanta. और अब यदि आप चाहें तो आप भक्ति वेदांत के वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। Signed, the most unfortunate, insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami, on board the ship Jaladuta, Commonwealth Pier, Boston, Massachusetts, USA, dated 18th of September, 1965. हस्ताक्षरित सबसे विनम्र सेवक A.C. भक्तिवेदांता स्वामी, Unfortunate, insignificant, दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही तुच्छ नगण्य सेवक A.C. Bhaktivedanta A.C. Swami. भक्तिवेदांता स्वामी। Srila Prabhupada ki jai. So I've been asked to speak until 7:10. तो मुझे 7:10 तक कहने के लिए बोला गया था। And now it is 7:10. और अब 7:10 हो चुके हैं। And we have with us His Grace Shruta Kirti Prabhu, और हमारे बीच में उपस्थित हैं His Grace श्रुत कीर्ति प्रभु, the beloved disciple of Srila Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य और सेवक। So I am going to take your leave at this time. तो अब मैं आपसे विदाई चाहूँगा। Thank you very much for your kind sangha.
आपकी संगति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब बहुत आभारी हूँ। हम भी आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj ki jai. Jai. Thank you very much, Maharaj, for singing this wonderful song, which depicts the mood of a pure devotee. And we are also going to have dancing kirtan at the end by His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. Haribo. So now we will request His Grace Shuddh Kirti Prabhu, a very dear disciple and servant, personal servant of Srila Prabhupada. He joined at the age of 20 in 1971. 1971 में 20 वर्षों की आयु में शुद्ध कीर्ति प्रभु ने इस्कॉन में योगदान दिया था। And he personally served Srila Prabhupada and traveled with him for more than 3 years. और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रील प्रभुपाद की सेवा की थी। वे इनके साथ 3 वर्षों तक सेवा करते रहे, सैर सपाटा करते रहे। So we will hear now from His Grace Shuddh Kirti Prabhu तो अब हम शुद्ध कीर्ति about प्रभु से Srila श्रवण Prabhupada. करेंगे। And after that we have His Holiness Jayadev Swami Maharaj. इसके बाद हमारे बीच में आएंगे श्री श्रीमद जयद्वैत स्वामी महाराज। Hare Krishna. We're okay? I can hear? Hare Krishna. Umagena timirandasya ginandina salakaya chaksu anmalitam jena tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swaya Rupa Kadamayam Dadati Sva Patantikam Vanchakopa Tirubhishcha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gauda Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण। It was very nice to be here today, this evening, and thank you all for being here. तो इस संध्या को आप सबके बीच में यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। You know, our Krishna consciousness movement, of course, begun by Srila Prabhupada back in 1965. हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत श्रील प्रभुपाद ने सन 1965 ईस्वी में की थी। So I have a question. Srila Prabhupada's disciples, what is their business? What did he want as their main business? In fact, Iskcon's mission, what is our business as followers of Srila Prabhupada? तो अब प्रश्न आता है कि श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों के रूप में, उनके शिष्यों के रूप में हमारा मुख्य कार्य क्या है? All of our services we do in the temples, outside of the temples, there's one main consideration that we should have. मंदिर में, मंदिर के बाहर हम जो भी सेवा करते हों, एक मुख्य बात है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। One word. एक शब्द है। What is that? वो क्या है? What is our service? हमारी क्या सेवा है? Anyone? Preaching. प्रचार। Yes, preaching. जी हाँ, प्रचार। I've been, they say MC, Master of Ceremonies, many times in Vrindavan, Prabhupada's appearance day, Prabhupada's disappearance day. तो प्रभुपाद के आविर्भाव और तिरुभाव के उपलक्ष्य पे मैं कई बार मैंने कार्यक्रम का संचालन किया है, मैं सूत्रधार रहा हूँ। Sometimes his disappearance day, there'll be 100 Prabhupada disciples. कभी-कभी तिरुभाव तिथि के अवसर पे 100 श्रील प्रभुपाद के शिष्य वहाँ पे एकत्रित होते हैं। And we have a time frame, 3 hours. और हमारे पास केवल 3 घंटों का समय होता है। 180 minutes. 180 मिनट होते हैं। So that means you tell them इसका मतलब आपको उन्हें बताना होगा। 2-3 minutes. 2 से 3 मिनट। Not possible for संभव ही Prabhupada नहीं। disciple to talk for 2-3 minutes. श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के लिए 2-3 मिनट बात करना संभव ही नहीं है। They all want to talk for 2-3 hours. ये तो 2-3 घंटे बात करना चाहते हैं। Because Prabhupada made preachers.
क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचारक बनाए थे। We're all eager to tell everyone about Krishna. हम सभी को कृष्ण के बारे में बताने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। And then we also have this situation, devotee is humble. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भक्त बड़े विनम्र होते हैं। You'll read over and over again. We can understand our advancement in Krishna consciousness by our humility. और कृष्ण भावनामृत में हमारी प्रगति हमारी विनम्रता के ऊपर निर्भर करती है। For a manager, that's a very difficult service. एक प्रबंधक के लिए ये बहुत कठिन सेवा होती है। Specialty of managers is offending. जो प्रबंधन करते हैं उनकी विशेषता है अपराध करना। I had been Prabhupada's servant for 2 years मैंने 2 वर्षों तक श्रील प्रभुपाद की सेवा की थी when he arrived in Hawaii. जब वे हवाई में आए। At that time, the person that had been temple president, he had gone, left, और उस समय जो मंदिर के अध्यक्ष हुआ करते थे वे भक्त छोड़ के जा चुके थे not under favorable circumstances. और बड़ी अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। Prabhupada knows everything. प्रभुपाद को सब कुछ पता था। Prabhupada also knew that I was going to be with him for a few more months, Prabhupada- 6 months, whatever. प्रभुपाद ये भी जानते थे मैं आने वाले 5-6 महीने उनके साथ रहने वाला हूँ। I didn't know that. मुझे नहीं पता था, But Prabhupada could see everything. बट प्रभुपाद सब कुछ देख सकते थे। So we're there in Hawaii. My godbrothers was Paramahamsa Swami and Nitai. तो हम हवाई में थे, मेरे गुरु भ्राता परमहंस स्वामी और निताई भी वहाँ पर उपस्थित थे। Paramahamsa Swami was his secretary. Nitai was Sanskrit editor. परमहंस स्वामी उनके सचिव थे और निताई संस्कृत के संपादक थे। They were also at the end of their term with Srila Prabhupada shortly. इनकी भी श्रील प्रभुपाद के साथ रहने की पारी समाप्त होने वाली थी। But while they were in Hawaii, this president had gone and they're trying to see who will be temple president in Hawaii. जब हम हवाई में थे ये मंदिर अध्यक्ष जा चुके थे और वे विचार कर रहे थे अब कौन होगा अगला मंदिर अध्यक्ष। And my 2 godbrothers were all in the room together and they said, well, Sruta Kirti, he can be temple president. और मेरे दोनों गुरु भ्राता हम सब कमरे में थे और उन्होंने कहा श्रुत कीर्ति इनको मंदिर अध्यक्ष होना चाहिए। Prabhupada sitting behind his desk, he smiled. He said no. प्रभुपाद मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं। He said he's too easygoing. प्रभुपाद ने कहा ये तो बहुत आसानी से चलने वाले व्यक्ति हैं। Manager and easygoing, they don't go together. Manager means he has to be tough. प्रबंधक यानी कि उनको अनुशासन करना होगा। Any managers here, that's a lesson for you. You have to do what's necessary in the temple. यहाँ पे जो भी अध्यक्ष हैं ध्यान दीजिए मंदिर में जो जरूरी है करना होगा। This morning, Maharaj, he was talking about Prabhupada's compassion. आज सवेरे महाराज श्री प्रभुपाद की कृपा के बारे में बात कर रहे थे। Sometimes compassion means kick you in the butt. कभी कभी कृपा यानी पीछे लात मारना। The one devotee I'm telling you about, his Sanskrit editor. जिस भक्त के बारे में मैं बता रहा हूँ वे संस्कृत के संपादक थे। For those of you that know Iskcon history, this name Nitai, you'll know what happened to him. जो इस्कॉन के इतिहास के बारे में जानते हैं आपने सुन रखा होगा निताई इनके साथ क्या हुआ। And it wasn't only him.